Now today we are going to discuss these questions from the transport in plants and mammals. Question number one, the sinoatrial node, SA node, and the avian node have an important role in control of the cardiac cycle. The timing of atrial and ventricular systole and diastole must be controlled so that the blood passes through the heart efficiently. Figure 1.1 is a summary of the blood flow मैम ये इसका डायस्टोल एंड सिस्टोल होएगा ना through the right side. Wait, let me discuss it with you. ठीक है, अभी हम आपका पेपर मैंने देखा हुआ नहीं है इसलिए I can't comment on it कि आपने क्या किया है, लेकिन let's discuss this question. Through the right side of the heart during one cardiac cycle, 3 boxes are given in the figure. They are not complete. You are supposed to complete box 3, 5, and 7 in the figure 1.1 by using only the terms systole and diastole. ठीक है, by using only the terms systole and diastole. ये यूज करनी है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्ड यूज नहीं करना. ठीक है, अगर वो आप लिखेंगे तो वो कंसिडर्ड रॉन्ग होगा. Blood arrives at the heart in the superior vena cava and the inferior vena cava. They are the big veins that are pouring the blood or causing the atrial diastole to happen, in which the blood passes. Number 2 point क्या है? The blood passes into the right atrium. Okay, and then what will happen at this point when the blood will be filled up in the right atrium? Now, what's next? That the atrial dash and ventricular dash. After the atria receives the blood, ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद? किसकी वजह से blood will be forced into डायस्टोल बोलते हैं the blood will be forced into the right ventricle. That is atrial systole and ventricular diastole will happen. So in the box 3, we were supposed to write atrial systole and ventricular diastole. Then blood is forced into the right ventricle. एक flow chart है ना, ठीक है, right ventricle and then the atrial मैम yes Anas वो जो थर्ड बॉक्स है वो उसके अंदर पहले डायस्टोल फिर सिस्टोल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है नहीं मेरा बेटा, जो नेक्स्ट देखो ना, आप अगर फ्लो देखो, पहले मैं भी यही समझी थी कि इधर ये आना चाहिए. देखो, ब्लड अराइव्स एट द हार्ट इन द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, वेना कावास में आ गया और ब्लड कहाँ चला गया? एरो क्या शो कर रहा है? दैट द ब्लड हैज एंटर्ड पास्ट इनटू द राइट एट्रियम. ठीक है, अब राइट एट्रियम से क्या होगा? एक्चुअली इधर से सेकंड से थर्ड पे यही लग रहा है कि एट दैट टाइम द एट्रियल डायस्टोल शुड हैपन. ठीक है, लेकिन फोर्थ पॉइंट देखो, ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल. इस थर्ड बॉक्स की वजह से द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल. तो ऐसा क्या हुआ होगा थर्ड बॉक्स में कि एट्रिया को और वेंट्रिकल्स को, जिसकी वजह से ब्लड विल बी फोर्स्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल. समझ रही हो आप मेरी बात? कि जो थर्ड बॉक्स है, सेकेंड से फ्लो में देखा जाए, ठीक है, सेकंड से फ्लो में देखो तो लग रहा है कि एट्रियल डायस्टोल हो रहा है जी. राइट एट्रियम में ब्लड इज पोरिंग इनटू, इज पासिंग इनटू द राइट एट्रियम, तो डेफिनेटली एट्रियल डायस्टोल मस्ट बी हैपनिंग. ठीक है, लेकिन जब हम फोर्थ बॉक्स देखें तो वो कह रहा है कि थर्ड बॉक्स के बेसिस पे द फोर्थ पॉइंट इज हैपनिंग. ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज blood is forced into the right ventricle. So what should happen in the third box? That the blood should be forced into the right ventricle. That is the atrial systole and the ventricular diastole will happen. And then the blood will be forced into the right ventricle. And then अब fifth और sixth को हमने देखना है. Atrial और ventriculars को क्या होगा? That the blood leaves the right ventricle and enters into the pulmonary artery. Atrial diastole will be happening. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है तो एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो चुका होता है, राइट? कार्डिक साइकिल में ये हमने बात की थी. इसलिए एट्रियल डायस्टोल को हम इतना अलग से एक फेज के और इवेंट के थ्रू के फॉर्म में नहीं लिखते. यू विल नॉट फाइंड इट बिकॉज इट्स अ वेरी small event and this happens when the ventricular systole is happening. Are you all getting me? Are you all getting me? ठीक है,
सो सिक्स्थ बॉक्स में क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पुश हो रहा है, तो एट्रियल डायस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। And then when the blood will be in the from the right ventricle enters into the pulmonary artery, तो उस वक्त atrial क्या हो रहा होगा, atrial और ventricular? Blood leaves the right ventricle and enters into the pulmonary artery. जी, anyone? अंश क्या हो रहा होगा इस वक्त जब वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, यानी कि राइट वेंट्रिक, ओ मैंने बोल ही दिया आंसर। राइट वेंट्रिकल जो है, सॉरी, डायस्टोल। blood leaves the right ventricle to enter into pulmonary artery. So atrial diastole. And what about ventricle, ventricular? वेंट्रिकुलर होगा। Ventricular, sorry, डायस्टोल। ventricular diastole. Right? So this is the second question, first question. Now the second question. Impulses sent out by the SAN pass to AVN, where there is a short delay, with reference to the figure 1.1. आदिल बड़े गौर से इन क्वेश्चंस को आपने देखना है, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स आपको मैंने भेज दी थी कि क्या क्या है, ठीक है। With reference to the figure 1.1, explain why it is important for the cardiac control, for the control of the cardiac cycle, that there is a short delay of at the AVN after impulses have been sent out by the SCN, right? So basically, जब SCN से impulses, wave of excitation moves down the AVN, down to the AVN, right? At that time, उस वक्त क्या कहते हैं, ये 0.1 सेकंड का जो डिफरेंस आता है, why this 0.1 second difference is important? Anyone? जी, आपने क्या लिखा था, डिस्कस कर लूं यहाँ पर? मैं पहले आंसर And because बताती हूँ, फिर आप। not contract at the same time. Because they should not contract at the same time. Very good. And the second point should be that the तो मैम atrial systole should happen first, right? And then the ventricular systole should happen. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो हार्ट है अभी पूरा कंट्रैक्ट नहीं हुआ होगा। एक्सप्लेन करना है ना, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो हम रीजंस देंगे कि व्हाई दिस डिले इज इंपॉर्टेंट, so that the atria contract first and then the ventricle contracts second, and so that the cardiac control, the heart should not uh, uh, should not start relaxing before it contracts, या should not contract simultaneously, अलग अलग होना चाहिए इनकी कंट्रैक्शन। क्योंकि अगर एक साथ पूरा हार्ट कंट्रैक्ट कर जाएगा, एट्रियल सिस्टोल भी हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो रहा है, तो डेफिनेटली हार्ट विल नॉट बी एबल टू pump the blood to the all the parts of the body। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल ही नहीं हुआ, तो फिर एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल इकट्ठे हो गया, तो दैट विल नॉट बी एबल टू पंप द हम ब्लड। ये भी लिख सकते हैं ना कि ना द ब्लड हैज टू फर्स्ट एंटर द वेंट्रिकल फॉर द वेंट्रिकल टू कंट्रैक्ट। यस, वेरी गुड, 1 पॉइंट, यस, ठीक है। अभी मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी ओपन करती हूँ। ये पेपर कौन सा है? एक मिनट है, मैं बताती हूँ। ये पेपर है 2023 का, समर 2023 2 पेपर है। ये आपके समर्स का पेपर है। इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं। समर 2023, मेरे पास मार्किंग स्कीम्स नहीं पड़ी हुई, लेकिन मैं यहाँ से निकालती हूँ। समर 2023 9700।
ये इसकी मार्किंग स्कीम है। ये देखिए, systole, diastole, diastole, systole, diastole, diastole. This is the question number 1 that we have just discussed, right? Third box, fifth box, and seventh box. दूसरा क्या है? Atria and ventricles do not contract, are not in systole at the same time. Number 1 कि दोनों एक साथ ना contract कर जाएं. मैंने alternative words use किए थे that the atria should not contract first so that the pumping of the blood could happen properly. 1 point will be given. Ventricles should contract after the atria contracts. Okay, the second point is this. I have been given 2 marks for this, and question ही 2 marks का है. That allows the atria to empty first. ये अंश वाला point है कि अंश ने कहा कि हम ये भी लिख सकते हैं कि ventricles should get filled up with the blood first so that the ventricles can supply the blood to the body. ठीक है, can be pumped to the body. So that's why atrial systole should happen first, and then the ventricle systole should happen second. So this is another reason. ठीक हो गया, वापस चलते हैं पेपर पे अपने. Is that clear, Adil? कितने मार्क्स हैं आपके इसमें, इस क्वेश्चन में? मैम एक. Okay. Changes in the blood pressure occurs in the heart during the cardiac cycle. ठीक है, cardiac cycle में blood pressure में changes आते हैं. These changes cause the opening and the closure of the bicuspid and tricuspid valves. Pressure जब create होता है atria में, तो atrioventricular valves, ये दोनों atrioventricular valves हैं, they get open. ठीक है, and the aortic and pulmonary valves also get open when the ventricular systole is happening or ventricular systole happens. Explain how blood pressure changes cause the opening of the tricuspid valve. It causes the opening of the pulmonary valve, or it helps the flow of blood through the heart. इसमें आपने basically opening of the valves show करनी है. और third point ये है, help the flow of blood through the heart in one way direction. ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं लिखूंगी that the tricuspid valve present on the right, present between the right atrium and the right ventricle opens when the atrial systole happens, and the atrial walls contract and push the blood downwards, right? And the atrioventricular tricuspid valve will open because of the pressure coming from that direction. And the pulmonary valve opens when the right ventricle contracts, right, and pushes the blood backwards. It causes the closure of the tricuspid valve and opening of the pulmonary valve because of the pressure, right? And how this helps the flow of blood through the heart, that is in one direction, that is when the blood tried to go back into the atrium, right atrium, because this is the right atrium there and right ventricle that they are talking about, right? And when the blood tries to go back to the atrium, the cups present in on the lower side of the valves, they get filled up with the blood, and the papillary muscles contract and the tendons will relax, due to which the valves close, tricuspid valve will close. ठीक है, अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लो. ठीक है, वैसे मैं ज्यादा डिटेल बता रही हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ ये लिखना है कि प्रेशर की वजह से कैसे कंट्रोल होता है. लेट अस सी द मार्किंग स्कीम नाउ. ये देखिए, opening of the tricuspid valve, pressure in right ventricle becomes lower. Wait, इसको डाउनलोड ही ना करूं. जी, how the opening of the tricuspid valve is taking place. Pressure in the right ventricle becomes lower than the pressure in the right atrium. मैंने कहा right atrium
squeezes, or you can say it contracts and causes the pressure build in the right atrium, right, as compared to the right ventricle. That's why, because of the pressure, the valves will get open. Opening of the pulmonary valve कैसे हो रही है? Pressure in the right ventricle becomes higher than the pressure in the pulmonary artery. That's why that pressure of the blood causes the pulmonary valve to open, right? How it helps in flow of blood through the heart, that one-way flow. I just told you that when the blood coming from one side, right, and when the blood comes from the opposite direction, ठीक है, the opening and closure of the valve is controlled by the, you can say, the blood flow direction in the correct direction, directs the blood direction of the blood. If you will explain that, it will try to go back and then the valves will get closed. Which valve will get closed? That is the atrioventricular valve, and the pulmonary valve will open, right? Blood flows from the high pressure to the low pressure always, ठीक है? जहां से pressure ज्यादा होता है वहां से low pressure पे move करता है, like from right atrium to the right ventricle, and then from the right ventricle to the because right ventricle में pressure ज्यादा हो गया होगा ना जब ventricle contract हो रहा है. That pressure changes aid coordination for the opening and closure of the tricuspid valve. ठीक है? Semilunar valve is open when tricuspid valve is shut. ठीक है? तो वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन थी कि मैंने वही भी बता दिया था कि valves ओपन कैसे होते हैं, वो इतना लिखने की जरूरत नहीं है. बट यू हैव टू टेल दैट प्रेशर की वजह से राइट एट्रियम के की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, राइट वेंट्रिकल के ज्यादा प्रेशर की वजह से पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है. और वन वे फ्लो कैसे होता है? that these valves get open because of the pressure coming from one direction, and when the blood tries to go back, the valves close, right? Is that clear? Can you hear me, everyone? Shall I move back to the test? Yes, this one. Come back. Question number 5. Figure 5.1 is a longitudinal section of a capillary in muscle tissue as viewed with the transpiration electron microscope. You can see that these are the red blood cells and they're passing. Why these are the red blood cells? Because they have got biconcave shape, they have no nucleus, and they are moving in one line in the capillary. And they are almost of the same diameter as the capillary. Are you getting my point? State the evidence visible in the figure 5.1 that identifies the cell inside the capillary as red blood cell. ठीक है? अभी मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं, बाइकनकेव हैं, they have no nucleus, they are moving in one line in the capillary, they have got almost the same diameter as the capillary. So I have told you 4 points through which you can tell that they are the red blood cells. अब I don't know आदिल आपने क्या लिखा था? I don't remember exactly. कितने मार्क्स है इसमें? आदिल कितने मार्क्स है इसमें आपके? Full. Okay, explain how the structure of the capillary wall is related to its function. Capillary wall ये नहीं कि जो visible differences हैं या visible चीजें हैं. Capillary wall के actually मैंने आपको क्या बताए थे adaptive features? That capillaries basically increase the cross-sectional area, number one. Capillaries increase the surface area. Capillaries are made up of one cell thickness. Capillaries are present, are microscopic, and they are present near to every cell of the body, right? तो basically ये वो points हैं जो आपको यहाँ लिखने चाहिए थे, that they have got less diffusion distance. That's why they are related to their function of exchange of gases and exchange of nutrients, exchange of waste products, right? Basically capillary का function यही है ना. और capillary का function question ये कह रहा है कि आपने उसके structure को explain करना है related to its function. ठीक है? Related to its function, कि वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पा रही है, राइट? एंड दिस इज फ्रॉम द सेम क्वेश्चन. नहीं, इसमें से नहीं है ये, इस पेपर में से और कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक. या है, लेट मी चेक once. नो, इट्स नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर. इसको हम बंद कर देते हैं. मुझे लगता है आप लोगों का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ. मुझे ये फीलिंग आ रही थी चेक करते हुए पेपर आप लोगों के.
you know, तो कि आप लोगों ने उसमें हम्म? क्योंकि उसमें ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जो क्वेश्चन है, कोलेजन की प्रॉपर्टीज, वो आपने सही नहीं लिखी। इसका मतलब है कि दैट I don't know whether you have not revised it. That's why the problem was there, or some other reason was there. Okay, मैं भी इसकी मार्किंग स्कीम ढूंढ के आपके सामने निकालती हूँ, ठीक है? Okay, figure. Is this clear? Right? That explain how the structure of the capillary wall is related to its function. Now, next is figure 5.2 is a diagram showing some of the events that occur as blood flows through a capillary in a respiring tissue. You can see that the cells respiring, they're releasing carbon dioxide here and they are giving it off. This is the lining of the capillary because this is the red blood cell, and these are also tissues that are giving off carbon dioxide. And what is happening here in the bloodstream, that is the Bohr shift. Carbonic anhydrase is converting carbon dioxide and water, and then water they convert into carbonic acid, and then they dissociate into carbonates and hydrogen ions, and this is how the oxygen is given off from the hemoglobin, and oxygen is going into the tissues. An increase in the respiration results in an increase in the carbon dioxide concentration in the blood and the release of more oxygen from the red blood cells to the tissues. Explain how an increase in carbon dioxide in the blood leads to the release of more oxygen from the red blood cells. Yes. Explain how an increase in carbon dioxide in the blood leads to the release of more oxygen from the red blood cells. You were supposed to write the entire Bohr shift, right? How it leads to, and the buffering effect. You will tell that when more carbon dioxide will be produced, it will cause the blood to become more acidic by converting carbon dioxide into carbonic acid with the help of carbonic anhydrase enzyme that dissociates into carbonates and hydrogen ion, and that causes the carbonates to go out and thus increasing the hydrogen ion concentration inside the red blood cell. That decreases the pH of the blood, and because of that the hemoglobin give off or kicks off the oxygen to the respiring tissues, caused by the Bohr's effect. This is called as Bohr's effect, and the hydrogen ions are accepted by the hemoglobin to neutralize it. बस सिंपल, ये क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है? क्योंकि हमने ये एक्सप्लेन करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज ब्लड के अंदर कैसे रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मींस बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट, ठीक है? बोहर्स इफेक्ट मींस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, प्रोटॉन्स रिलीज होंगे इन द रेड ब्लड सेल्स, ज़्यादा pH decrease होगा, and that's how the more Bohr's effect will be there. Right? Is that clear, everyone? Chloride ions are a constituent of blood plasma. The concentration of chloride ions in the plasma of the deoxygenated blood is between 2 to 4 millimolar decimeter cube, lower than the plasma of oxygenated blood. Okay? Chloride ions kya hai? Are a constituent of blood plasma. You know, chloride shift happens. Okay? Carbonates come out and chloride ions go into the red blood cells. Explain why the concentration of chloride ions in the blood plasma of the deoxygenated blood is lower than the plasma of the oxygenated blood. Obviously, because of the chloride shift. Chloride shift फिर explain करेंगे कि क्यों हो रहा होता है. Because when the carbonate ions are coming out to maintain the negative ions in and out of the, you can say, the red blood cells, एक ये reason है. Number two, to prevent the inside of the red blood cells to become too positive, chloride ions move out. Is that clear? ठीक है, आदिल आप अपनी गलतियां भी देख लें जो आपने गलतियां की हैं, अंश आप भी देखें, मैं आपका पेपर चेक करूंगी, उसके बाद आपको भेजती हूँ, और जो डिस्कशन हो रही है। जी बेटा, हमें दोबारा समझा सकती है? जी मेरा बच्चा, क्यों नहीं। क्लोराइड आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। आपको पता है ब्लड प्लाज्मा में होते हैं क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस भी होते हैं, क्लोराइड आयंस भी होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन द प्लाज्मा of deoxygenated blood is between 2 to 4 molar decimeter cube, that is
lower than the plasma of the oxygenated blood. ठीक है, क्यों वो कह रहा है कम होते हैं? प्लाज्मा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ होता है? जहां पर रिस्पायरिंग टिश्यूज होते हैं। जहां रिस्पायरिंग टिश्यूज होते हैं वहां पर ये रिएक्शन हो रहा होता है, ये वाला। यहाँ पर इसने क्लोराइड शिफ्ट शो नहीं किया हुआ, लेकिन होता है। ठीक है, अब इस जगह पर जहां रिस्पायरिंग टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको पता है कार्बोनेट्स ज्यादा बनते हैं, और उसकी वजह और हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनते हैं। अब कार्बोनेट्स को बाहर ले जाने के लिए क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट होता है, ताकि बाहर और अंदर नेगेटिव चार्जेस भी मेंटेन रहे, और अंदर वाली जो क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो जाए। ठीक है, ताकि वो हाइड्रोजन आइंस जो है, जैसे ही वो क्लोराइड आइंस अंदर शिफ्ट होंगे, कार्बोनेट्स बाहर जाएंगे, हाइड्रोजन आइंस will be accepted by the hemoglobin. And this is the use of, you can say, the mm, द क्लोराइड शिफ्ट। अगर देखना है तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो क्लोराइड शिफ्ट का एडवांटेज क्या है। ये देखो, यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है कि क्लोराइड शिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द हाइड्रोजन कार्बन आयंस दैट इज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स as a result of action of carbonic anhydrase and all that, right? And they diffuse out of the cell into the blood plasma. These ions have a negative charge, and to balance their movement, chloride ions move from the blood plasma into the red blood cells, and this is called as chloride shift. If the chloride shift did not happen, the inside of the red blood cells would develop an overall positive charge because of hydrogen ions from the dissociation of carbonic acid would accumulate. Hydrogen ions cannot leave the cell if chloride shift will not happen because its cell membrane is not permeable to them. The influx of the chloride ions therefore help to prevent the overall charge inside the cell from becoming too positive. कुछ समझ आई कि नहीं आई? क्लोराइड शिफ्ट क्यों हो रहा है? कार्बोनेट्स को बाहर ले जाने के लिए। कार्बोनेट्स से बाहर जाएंगे तो हाइड्रोजन आइंस भी जो है वो बाहर जाएंगे, और वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे इनटू द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो इफ carbonate ions will not come out and the chloride ions will not go in, the hydrogen ions will not be able to leave the cell. ठीक है, क्योंकि वो परमिएबल नहीं होते सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसलिए इसका मतलब है कि कोई को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज होती है जो क्लोराइड आयंस को बाहर से अंदर और हाइड्रोजन आयंस को अंदर से बाहर और कार्बोनेट्स को भी साइमल्टेनियसली ट्रांसफर करती है। ठीक है, this is how it helps it to become not to become too positive from the inside. Is that clear, Adil? चलिए, figure 6.1 is the diagram showing the passage of the water through the tissues of a flowering plant from the soil to the atmosphere. The arrow shows the direction of water movement. ठीक है, water की movement show कर रहा है, and you can see here the root hair cell, the cortex, and then the xylem, and then here this is moving into the midrib, and then to the palisade mesophyll cells, spongy mesophyll cells, transpiration हुई, और ये transpiration diffuse हो गए, water vapors out. The structure labeled X is the part of the symplastic pathway. State the name of the structure X. X क्या है? X is plasmodesmata. Here you can see X is plasmodesmata, right? Next चलते हैं. The structure labeled Y in the cell wall is a barrier to the apoplastic pathway. ठीक है? State the name of the structure Y. Casparian strips भी कह सकते हो, subrin भी कह सकते हो. वैसे Casparian strips is the best word. With reference to the figure 6.1, complete the statement about the movement of water in the flowering plant. Water moves from the soil solution to the cytoplasm of the root hair cell by osmosis. Water moves from the xylem in the root to the leaf by transpiration pull, and also by the capillary action. Obviously, water moves from the mesophyll cell wall. नहीं, लेकिन लीफ तक जाने के लिए
कैपिलरी एक्शन नहीं होता, वहां पर मैम हमें लिखना चाहिए इवेपोरेशन होएगा। था थर्ड वन, water moves from the mesophyll cell wall जी to the intercellular air जी spaces by evaporation. Very good. Water vapors move from the intercellular air spaces to the atmosphere डिफ्यूजन। outside the leaf by diffusion. Excellent. ठीक है. State one way visible in figure 1.1 in which the labeled part 1 of a molecule A differs from the part labeled 2. आई थिंक इसकी फिगर नहीं यहाँ पर पेस्ट हो सकी थी, है ना? हाँ, इसका फिगर का इश्यू था कि यहाँ पर फिगर नहीं थी. यस, आई गॉट इट. एक मिनट. ओके. A molecule of collagen consists of 3 identical polypeptides that form a triple helix. The amino acid glycine forms 1/3 of the amino acid in the collagen molecule. Glycine is the smallest, you can say, amino acid because it has got an H at the place of R group. Figure 5.1a shows the polypeptide molecule during the protein synthesis. A molecule of glycine is shown just before it is added to the polypeptide. ठीक है, ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें इसने ऐड होना है, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगी. ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं इसको बोलते, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन रिएक्शन से ये हाइड्रोजन और ये OH रिमूव होगा और ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा. ठीक है, यू वर सपोज टू राइट द, आई थिंक द question number 1 is complete the figure 5.1b to show the molecule of glycine added to the end of the polypeptide. यहाँ पर ऐड करके बताना था. ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड NH और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ आना था. ठीक है. Next question, state the type of the reaction that occurs when glycine is added to the end of the polypeptide, that is condensation reaction. Adil, can you see that? Okay. Explain the importance of glycine in a collagen molecule. Glycine की क्या importance है collagen में? Obviously, glycine is every third molecule. It means that it has, और collagen की क्या properties